Hey what's up guys and welcome back to another video। आज की वीडियो में मैं आपके चंद पूछे हुए क्वेश्चन जो है वो आंसर करूंगा। मैंने इंस्टाग्राम पे पोल लगाई थी 2 दिन पहले जहां मैंने आप लोगों से कहा था कि आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड फुटबॉल और आई गॉट 20-25 क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोना बी आंसरिंग टुडे इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फुटबॉल। आई थिंक ये सरकास्टिकली पूछा गया है लेकिन हम इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए फुटबॉल इज़ अ गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स। 90 मिनट का मैच होता है, 2 हाफ्स होते हैं 45 मिनट के। अगर नॉकआउट गेम हो और 90 मिनट्स में अगर गोल नहीं होता तो फिर एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी ना हो तो फिर पेनल्टीज पे बात जाती है। पूरे 90 मिनट के बाद सिर्फ ये देखा जाता है कि दोनों टीमों में सबसे ज़्यादा गोल किसने स्कोर किए। जिसने गोल ज़्यादा स्कोर किया वो जो है वो मैच जीत जाता है। तो दिस इज़ फुटबॉल, दिस इज़ लाइक एन ओवरव्यू ऑफ फुटबॉल। और हाँ, फुटबॉल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ फुटबॉल, तो मतलब हाथ नहीं लगा सकते बॉल को। Next question is very interesting. I am Musa Khan asks, who is the most underrated and overrated player in your opinion? Underrated, there are a lot of players which I think are very underrated. Sergio Busquets and Di Maria, I think, are on the top of the list. Paulo Dybala भी है इस list में. But if we talk about the most overrated players, तो I think it would get quite harsh. लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश यंगस्टर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ज़्यादातर ओवर रेटेड ही होते हैं लेकिन उनको ओवर हाइप किया जाता है। फॉर एग्जांपल एल्विन फिलिप्स हो गया, हैरी मैगवायर, जैक ग्रिलिश, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा पे किया गया था। तो आई थिंक कि इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादातर ओवर हाइप्ड होते हैं। ओवर रेटेड, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी फुटबॉलर विच इज़ वेरी ओवर रेटेड और आई थिंक इट वुड बी क्वाइट हार्श बिकॉज लाइक फुटबॉलर के पास थोड़ी बहुत तो क्या उसे कहते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट होती है। तो आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट हार्श। बट अगर just to answer this question, I think I'll go with Jack Grealish, Maguire, and Calvin Phillips. So the next question is what I think about Neymar. Neymar is a fantastic player and is one of the best players in the world right now still. And he had a great World Cup campaign. Despite the fact that Brazil got knocked out by Croatia, ब्राज़ील ने चंद गेम जो हैं वो अच्छी खेली हैं और नेमार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ग्रुप स्टेज में इंजर भी हो गए थे लेकिन फिर भी अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो नेमार के लिए वर्ल्ड कप ठीक ही गया, बुरा नहीं गया। बहुत अच्छा भी नहीं गया लेकिन बहुत बुरा भी नहीं गया। नेमार की एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ, मतलब मेरे ओपिनियन में, वो ये था कि नेमार को कभी भी बार्सिलोना नहीं था छोड़ना चाहिए। नेमार वाज अ वेरी ग्रेट प्लेयर एट बार्सिलोना और अगर वो बार्सिलोना में रहते तो आई थिंक बार्सिलोना भी चैंपियंस लीग जीतती रहती और आई थिंक नेमार जो है वो एक बैलन डॉर जीत सकते थे एफसी बार्सिलोना के साथ। और अगर नेमार मेरी बात सुने, जो कि वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, तो मेरी एज अ फैन उनको ये एडवाइस होगी कि ही शुड प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। एंड क्योंकि ब्राज़ील की टीम बहुत अच्छी है एंड दे कैन ट्राई लाइक नेक्स्ट टाइम। इस दफ़ा तो अनलकी हो गए लेकिन दे कैन ट्राई द नेक्स्ट टाइम। मेसी भी तो अपना आखिरी वर्ल्ड कप जीत गया ना, तो आई थिंक नेमार कैन ऑल्सो डू दैट विद ब्राज़ील। और Neymar is a very wonderful player, a very exciting player. The way he glide past through the defenses, it's very good to watch. Or I think he's one of the best players, and I think that he should really try to get a Ballon d'Or. So the next question is a bit tricky one. It says stop supporting Manchester United or for lifetime or else Messi will die. Which one will you choose? See, I think that Messi has achieved everything in his life. He has won the World Cup and he has Champions League. He's I think is the second most decorated player in the world football. So I think he has won everything. But if we talk about Manchester United, we haven't won a major trophy since 2017. So I think that I'll stick with this option. And I love Messi, but I think that he has achieved a lot of things in his life. So I think he's happy with this life anyway. So yeah. So the next question, not a question actually, but it's a statement that Erik ten Hag will be the man to bring Man United back to the top. Well, I hope so. And I think that he can prove to be a good manager. The way he make unpopular decisions, the way he carry out the plans, I think is a very good manager, and I think that he can do wonders with Manchester United if the owners back him, of course. Next is also a statement, not a question, from the same person. Maguire without captaincy is a much better player. I think the same. I think Maguire, when he's the captain of Manchester United, he absorbs all the pressure and because of absorbing all the pressure से perform नहीं होता उस level पे। I think Maguire, अगर आप इंग्लैंड के मैचेस देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, Maguire जो है वो हमेशा अच्छा खेलते हैं। तो अगर आपकी टीम 3 सेंटर बैक के साथ खेलती है तो I think Maguire is the best option for you क्योंकि he's a very slow center back but he is a very good center back. डिफेंडिंग उनकी अच्छी है लेकिन पेस नहीं है। आजकल ज़्यादातर अटैकर्स की पेस होती है जिसकी वजह से अटैकर्स को रोकने में मुश्किल होती है मैगवायर को।
और दूसरी बात, ही शुड नेवर बी द कैप्टन ऑफ मैन यूनाइटेड। उसका इतना ब्रेन नहीं है, ठीक है, मेंटली वो इतना स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी द कैप्टन ऑफ यूनाइटेड और डेविड डहाया। और मुझे लगता है कि हैरी मैग्वायर को चांसेस मिलने चाहिए, क्योंकि हैरी मैग्वायर इज अ गुड प्लेयर। अगर आप इंटरनेशनल इंग्लैंड को देखते हैं तो ही परफॉर्म्स वेल फॉर देम, जिससे पता चलता है ही इज अ गुड प्लेयर। बस वो अंडर प्रेशर आते हैं जब भी उनको कैप्टन बनाया जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर गावी एंड पेड्री द नेक्स्ट बिग थिंग? वेल, मैं एफसी बार्सिलोना के इतने मैचेस नहीं देखता, चैंपियंस लीग या यूरोपा में मैं देखता हूँ ज़्यादातर एफसी बार्सिलोना को, या एल क्लासिको में देख लेता हूँ। बट यस, आई थिंक गावी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और पेड्री तो आई थिंक ही इज़ राइट नाउ द टॉप 4 or 5 young midfielders in the world, if not the best young midfielder in the world. आई थिंक पेड्री इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और अगर बात की जाए गावी की, तो आई थिंक ही इज़ इम्प्रूविंग एवरी डे। टू स्टार्ट, मतलब अपनी नेशनल टीम में स्टार्ट करना इतनी सी एज में, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। एंड और आई थिंक कि अगर बार्सिलोना इन दोनों प्लेयर्स को अच्छी तरह यूटिलाइज करे, क्योंकि दिख रहा है कि जावी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं पेड्री और गावी दोनों को खिलाना। तो आई थिंक दे आर ऑब्वियसली वेरी गुड प्लेयर्स एंड दे कैन prove very fruitful for FC Barcelona in the future too. So the next question is, Messi Ronaldo. It's a statement again. Messi Ronaldo was never a debate. I don't know. I don't think so. Messi Ronaldo was always a debate before the World Cup. I won't say actually before the World Cup. If you go back to 2015 and 16, I think at that time when Lionel Messi did not have like 7 Ballon d'Ors, I think then it was a debate, because there was a time when both of them had 5 Ballon d'Ors. It was a debate at that time, but as Messi won his 6th one and the 7th one, and now I think he's gonna win his 8th one, because he has won the World Cup and he's in a very good form. So I think it gets a bit difficult to say that Cristiano Ronaldo is better than Lionel Messi. So the next question is, Xavi, Iniesta, Zidane legacy wise. Now I have a special thing for Zidane, so I'll say that Zidane for me is the best. Actually, I think that Zidane is like the 5th biggest player to ever play the game. And if I talk about Iniesta and Xavi, both are greats. But I like Iniesta more, so I'll go with Zidane, Iniesta, and Xavi. I hope I don't offend any of the Barcelona fans watching right now. So the next question is also a similar one, but instead of Zidane, Xavi, Iniesta, we have Gerrard, Lampard, and Scholes. Well, I'm a Manchester United fan, but I'm not a biased fan. I think that Frank Lampard was the best among all of them, because he has won a Premier League, he has won Champions League, and if you see the stats of Frank Lampard, they were also pretty good. So I'll say Frank Lampard, Paul Scholes, and Steven Gerrard. Steven Gerrard, because like he hasn't won a Premier League, so I think that that is very important for a player to win if he wants to be on top of Paul Scholes, because if I'm not wrong, Paul Scholes has also won a treble, so I think that is very important. So on to the next one. I don't know if it's a statement or a question. Modric in top 5 mids of all time. Of course, Modric is, I think, the 4th or 5th best midfielder to ever play the game. He led his team to the World Cup finals in 2018, and this time again they were in the semi-finals. They won the 3rd place match, so they are the third best team in the World Cup. And Modric also has a Ballon d'Or to his name, and he's one of the best midfielders to ever play the game. He's like 38 or 37 now, and he still plays like prime Kevin De Bruyne. So I think that Luka Modric is one of the best players to ever play the game. So yeah, I think he surely is in the top 5 mids of all times. The next question is a very funny one. It says, is Garnacho overrated? I don't think so that Garnacho is highly rated by any person. Like, Garnacho जो है अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, एंड ही इज़ अ वेरी यंग प्लेयर, ठीक है। उसके पास अभी अगर आप मैन यूनाइटेड के मैचेस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि लैड के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन टू से दैट ही इज़ ओवररेटेड और अंडररेटेड, आई थिंक इट्स वेरी अर्ली, बिकॉज़ लाइक ही इज़ फेयरली रेटेड। कोई भी ये नहीं कहता कि ही इज़ गोना बिकम द नेक्स्ट लियोनेल मेसी। आई नो सम पीपल से दैट, बट ऑब्वियसली दैट इज sarcastically, ठीक है। और बाकी इज़ अ गुड प्लेयर। ही स्कोर्ड द विनर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट फुलहैम injury time, so I think that the lad can handle pressure. He's good with finishing and he is a good player. His pace भी काफी ज़्यादा है और he's performing well recently for Man United, so I think he's a very good player, but obviously he is not that good. So मुझे नहीं लगता कि United fans के अलावा इसे कोई इतना रेट भी करता है अभी के लिए, but I think इसके पास काफी ज़्यादा potential है और अगर ये अपने potential को meet करेगा तो he can become one of the best players in the world. The next question is, who do you think is better than who do you think is better, Lionel Messi or Cristiano Ronaldo, and why? I think that Lionel Messi is better than Cristiano Ronaldo because of the recalls and because of the trophies he has, and obviously the World Cup helped him a lot. Lekin if I talk about my personal favorite, so I am a Cristiano Ronaldo fan, but
आई थिंक कि इसके अंदर कोई मतलब वियर्ड बात नहीं है, दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करें स्टार्ट तो आपको पता चल जाएगा कि मेसी जो है उनके स्टार्ट जो हैं वो बेहतर हैं। आप गोल असिस्ट रेशियो देख लें, असिस्ट देख लें, या इस तरह की बाकी चीज़ें भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि मेसी के स्टार्ट रोनाल्डो से अच्छे हैं। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक दैट बोथ प्लेयर्स आर वंडरफुल प्लेयर्स, बट इफ़ यू सी द स्टार्ट्स आई थिंक लियोनेल मेसी, और खासतौर पे आफ्टर दिस वर्ल्ड कप आई थिंक लियोनेल मेसी इज बेटर देन क्रिस्टियानो। बट इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल फेवरेट, इट हैज़ टू बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रोनाल्डो के क्लब के रिलेटेड बात की जाए, जो उसका फ्यूचर क्लब होगा। देखें, अभी इट्स नॉट कंफर्म्ड। ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो हैं वो यही है कि ही विल प्रोबब्ली साइन फॉर सऊदीयाज क्लब अल नसर, लेकिन अभी तक वो भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, कुछ कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। जब कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो आई ट्राई टू शेयर इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी तक तो कुछ नहीं है, बट आई थिंक ही विल गो टू सऊदी अरब। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो आई थिंक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुड रियली रिटायर फ्रॉम फुटबॉल एंड ही शुड लाइक फोकस ऑन हिज कोचिंग नाउ. I think he should start from the youth academy of Real Madrid, and then he should make his way to the top level, and one day probably inshallah he will be winning Champions League with Real Madrid or Manchester United as a manager. To the last question now, okay, is Messi linked with football in any ways? I mean, he is still a footballer. He is above football because he's a very great player, and all the records he has to his name are incredible. But I think that he is still a footballer. I mean, अभी वो retire नहीं हुआ तो he is still linked to football. But I think अगर वो retire भी होगा, he would always be linked to football. So yeah. So thanks a lot for watching the video. These were all the questions. क्वेश्चन जो है वो मैंने skip किए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं थी करनी। तो सॉरी फॉर ऑल दोस्त जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी ऑल दीज क्वेश्चंस. इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आई विल बी मेकिंग रेगुलर कंटेंट either on Manchester United or just random Premier League games. So make sure you click the bell so you get notified every time I post a new video. So thanks for watching the video. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.